Drought-resistant transgenic crops. After pest or plant diseases, drought, it is an also important environmental factor that can influence plant growth and productivity. In addition to drought or water shortage, some other factor they can also be categorized under the heading abiotic stresses. So we can say that one of the most important abiotic stress, even with reference to our environment, it is the drought, that is low water availability. पाकिस्तान में भी ये इशू आ रहा है कि वक्त के साथ साथ जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होने का ख़दशा है। तो इस पर्पज़ के लिए हमें ऐसी क्रॉप्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि कम वाटर में भी हाई जो फूड यील्ड है या क्रॉप यील्ड है वो प्रोड्यूस करें। एंड अगेन हेयर we can take help of the gene manipulation to develop certain traits in the crops so that they can grow under low water availability. Now naturally what happens when plants they are exposed to low water availability or water stress and even some other type of stresses like the salinity where the salt concentration it may be increased. अगर प्लांट जो है उसको वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो उसमें कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि नेचुरली ऑपरेट होते हैं। मिसाल के तौर पर उनमें उनकी जो रूट्स हैं उनमें ख़ास किस्म के मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें बीटेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एक एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स and polyamines they can also be produced by plants so that they can maintain the ionic balance within the plant cells. अब इसका एडवांटेज क्या है? सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये कंपेटेबल सॉल्यूट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, लाइक बीटेन है, शुगर्स हैं या पोलियमाइंस हैं और अदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये कंपेटेबल सॉल्यूट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि प्लांट सेल का जो एनवायरनमेंट है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो रेगुलेट होता है, हाई होता है। उसकी वजह से जो प्लांट का जो वाटर है सेल्स के अंदर उसका लॉस जो है वो रुक जाता है या उसको मैनेज कर लिया जाता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म by which plants they can grow under low water availability. If these compounds they are naturally produced, then their expression can be upregulated by manipulating certain genes, because high expression of such metabolites like betaine, polyamines or specific type of sugars, it is not toxic to plant cells. Therefore, they can be expressed in high concentrations so that they can mediate plants' water stress. So here it is one of the example that is related to betaine. So the gene of betaine, it can be inserted into certain plants, for example in rice, where it can be expressed. And after expression it can regulate water stress shortage. And different type of plants they have been used as a source and they have been transformed. Here example one can quote about the barley, that barley betaine gene it has been inserted into the rice, and especially it is related to the synthesis of one of the enzyme that can mediate the biosynthesis of this betaine. Once this gene from the barley it is transferred to the rice plant, its production was increased around 10 to 30% under water shortage condition. So this is how one can
use different type of metabolites so that they can mediate water shortage stress to plants.